Right, so welcome back. This is your lecture 2 here. So this will be your lecture 2. First lecture we've already completed of income from house property. Okay, assessment year 22-23, and it's your June 2022 attempt of CMA intermediate, and Finance Act 2021 is applicable for you. Okay, तो ये आपका बेसिकली क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड लेक्चर है. तो अब हम चलेंगे. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में हमने क्या ये सब देखा था, जो मेन चार्जिंग सेक्शन देखा था, ठीक है. उसमें हमने ये देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी चाहिए चार्ज करने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओके, ओनर होना चाहिए एसएससी उसका, और खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स देखे. तो ये एक नेगेटिव कंडीशन है, ये तो पॉजिटिव कंडीशन. ठीक है, और फिर हमने तो ये सब चीजों का इसका सब एक्सप्लेनेशन हमने देखे थे. ओनर का, राइट, यहाँ सब कहते हैं लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर. तो लीगल ओनर वो है जिसके पास टाइटल है. बेनिफिशियल ओनर मैंने जो एग्जांपल दिया था आपका, एक सोसाइटी वगैरह बहुत लोगों से पैसे कलेक्ट करके घर बनाती है वो, तो वैसे ओनर्स बेनिफिशियल ओनर्स बनते हैं. ठीक है, ये फ्लैट जो है वो सोसाइटी के नाम पे रहता है, उसको बेनिफिशियल ओनरशिप दिया जाता है, उनको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर. अब नेक्स्ट है फिक्शनल या डीम्ड ओनर. तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर डीम्ड ओनर अगर है वो, तो उसका लीगल और बेनिफिशियल ओनर टैक्सेबल नहीं रहेगा. डीम्ड ओनरशिप विल टेक प्रेफरेंस ऑलवेज. ठीक है, ये बात हमने देखे थे. और डीम्ड ओनर के मैंने बताया था कि आपके 5 पॉइंट्स होंगे. सो आई जस्ट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, so we had seen chargeability, that it should be a house property, SSC should be owner, should not be used for his own business or profession. These conditions we had seen, and then this was owner and all this, and then in ownership we saw legal owner, where it should have legal title. Beneficial ownership is like a society which takes money from people and then it builds a flat and gives them the flat. Okay, here legal ownership is with the society, and the flat owners are called beneficial owner. Okay, so third is fictional or a deemed owner, and we said that fictional or deemed ownership takes precedence over the other two. So if there is a deemed owner, then you will have to first see that. Okay, then you will not consider legal owner and beneficial owner for taxation. The deemed owner will always be taxed first. There are 5 cases of deemed owner. So we had seen that one is transfer to spouse or minor child, okay, without adequate consideration. So इसका मतलब है जैसे बिना पैसों के अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, किस चीज में नहीं होना चाहिए? नॉट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, डिवोर्स सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, माइनर मैरिड डॉटर को नहीं होना चाहिए. क्यों? लॉजिक से आप देखिए कि इन दोनों को देने के बाद वो इनकम पे उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना, थर्ड पर्सन के पास कंट्रोल चला जाएगा, तो वो क्यों डीम्ड ओनर कहलाएगा? ओके, तो ठीक है, ये हो गया डीम्ड ओनर, अपना पहला पॉइंट आपका. और फिर बाद में सेकंड पॉइंट हमने देखे थे, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट. तो ये मैंने बोला था जो रजवाड़ा वगैरह होता है बड़ा, वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं उसके. ये कुछ चाल होते हैं ना जो मुंबई वगैरह में, उसमें भी ये होल्ड वुड करता है. ठीक है, तो ये तब होता है ना जब किसी को बाय विल मिल जाती है वो प्रॉपर्टी. ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो है लीगली डिविजिबल नहीं रहती, तो जिसका ओनरशिप जो मेन पर्सन जो रहता है उसको सारे प्रॉपर्टीज का ओनर मान के टैक्स करते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, फर्स्ट वन is transferred to spouse or minor child without adequate consideration. Okay, and the 2 exceptions you would have noticed already. Okay, so here what you have to see is whether he is eventually enjoying the income or not. In the 2 brackets where not in red is written here, he will not be enjoying that income eventually. It will be some other person. Okay, so which is why he will not be deemed owner. And then the second case we saw, holder of impartible estate. So this is like a big mahals and all are there, no, where
say you have kings, nizams, and all have got huge properties. Okay, they are all those properties have several units. So the one king or his representative, no, he is said to be the deemed owner in that case. Then next is property held by member of company, society, or other education, other association. This is the same example which I had given earlier. Okay, like that society taking money, building apartments and giving. Okay, so these are normally called house building schemes. Okay, so you must have, particularly people from Maharashtra might have heard of MHADA, Maharashtra Housing Board. Okay, similarly, there's other government housing boards and all that. Right? So wherever, in those boards also, wherever the property becomes registered in your name, then you are not a deemed owner, you are directly registered owner. In cases where it is registered in the name of that association, there you are deemed owner. Okay, so then after that, next point is acquired property under 53A of Transfer of Property Act. So what this act says is, see, now 53 capital A of Transfer of Property Act, okay, it talks about partial transfer. Okay, partial transfer of property. So say for example, there is a builder. Okay, you want to buy a property. So you have paid, so total value is, let me say, total value is 20 lakhs. Okay, of the property. Okay, total value is how much? 20 lakhs. Now you have paid him 15 lakhs. Okay, and he has given you possession. Okay, you give me 15 lakhs and you take possession. He said he has given you possession, and you said that, say, let us say after 3 months, I will pay the balance. Okay, like this happens, right, quite regularly. It happens quite regularly. Like you take possession first and then you pay the balance. So this type of contracts are called partial contracts. So basically it is like, it comes under section 53A of Transfer of Property Act. It's called part performance of contract. It's called part performance of contract, comes under 53A. Completely, when property is like whole payment is done, those cases are not covered under this act. That go to Registration Act. Okay, so this is for part performance of contract. So in this case, you have paid 15 lakhs. No, you will be the deemed owner. That is the moot point here. ठीक है, तो आप लोग समझे कि क्या है कि क्या है कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया है, क्या एक बिल्डर है, आप 20 लाख की प्रॉपर्टी है आपकी, 15 लाख देके आपने पोजीशन ले ली, ठीक है, फिर बोले आपने बाकी मैं 3 महीने में दे दूंगा, तो इसको बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस सेक्शन 53A में आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो इस केस में आपको डीम्ड ओनर माना जाता है, क्योंकि ये आपको नाम ट्रांसफर तभी करेगा पूरा जब आप वो 5 लाख पूरा दोगे। When you will pay those 5 lakhs, only then he'll transfer the legal name. Okay, but he will not be the deemed owner. You will be the deemed owner. So house property assessment will be done in your name. Okay. So this is that point. That is this point. Okay. Then next point is lessee. Okay. Now we all know about lease agreement. You would have heard, right? हम लोग कई बार सुनते हैं घर लीज में ले लिया, जैसे बोलते हैं कि 2 लाख दे दिए और 2 साल के लिए घर ले लिया लीज पे। करेक्ट, सुने होगे आपने। You would have heard that people pay 2 lakhs and take house in lease for 2 years. Correct. So lots of different kinds of lease agreements are there. Okay, so we are talking about this particular
these particular conditions, right, covered under section 269 UA clause F. Okay. So here, what is here, the main point is 12 years. Okay. If your lease is for 12 years, you will become deemed owner. That's all. Okay. If lease is 12 years, you will be deemed owner. Got it? But there are some more conditions, like if your lease is for 6 years. Okay. Your lease is for 6 years, but extendable for another 6 years or 8 years, whatever. Extendable by another 6 years at the end of the period. Then you have total NC. Total is 12 years or above, right? Then it is, you will be deemed owner. But if this lease, okay, we understood this point also. But if lease is extendable for a period less than 1 year, correct? You would know that many times we do agreements for 11 months, correct? Okay. So if this 6 years is the condition is such that you can do 11 months for say 7 years. So 11 7s are 77 months, and 72 is your 6 years, correct? If I'm saying that extendable till 7 years, 11 months each. So how much is the total months here? Calculate 77 months. And 12 6 is 72 is what you need for 6 years, correct? So it's more than that. But in this case, he will not be a deemed owner because this 7 years will not be considered. Because for extendability, minimum period has to be 12 months. If your extendability is less than 12 months, then don't consider it. Okay. So that these are the 3 conditions. If you have understood these 3, then there is nothing more in it. ठीक है, तो मैं ये समझाता हूँ ये पॉइंट आपको फिर से. पहली बात, सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, 12 साल या उससे ज्यादा लीज जो है वो डीम्ड ओनर बनोगे आप. ठीक है, 12 साल या उससे ज्यादा में आप डीम्ड ओनर बन जाओगे. अब लीज आपका 6 साल का है, लेकिन लीज क्लॉज ऐसा है कि 6 साल के बाद और 6 साल आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. तो टोटल आपको देखना है, 12 साल हो रहा है ना, डीम्ड ओनर बन जाओगे. लेकिन जो एक्सटेंडेबिलिटी है, ये अगर 12 महीने से कम है तो वो नहीं चलता, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा. बस इतना सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है. ये केस में मैंने बताया कि 7 साल है, आप एक्सटेंड कर सकते हो. 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, तो 12 महीने से कम का हो गया. ठीक है, तो टोटल महीने भले ही आपके पास राइट 77 का है, जो कि 6 साल से ऊपर है, लेकिन 11 महीने के होने के कारण इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे. सो अगेन, इन शॉर्ट, इफ इट इज एक्सटेंडेबल for a period of less than 1 year, okay, that period will not be considered. Okay, just remember that. That's all it is. Only 3 things here you have to understand. Okay, Bala, understood now? Okay, perfect. Right? So, yeah, Ajit. No, I'm not able to hear you. You can just probably type it in the chat. Why we take an 11 month? Just type it in the chat, Bala, because your voice is not being clear now. Okay, so we are not taking 11 months here. It is anything less than 12 months. So it can be 11 months. It can be 11.8 months. It can be 11.11 months. Okay. So any of this, it can be 8 months. But the point is anything less than 12. So all these are less than 12, right? So less than 12 is what we are seeing.
This is also one of the reasons where we do rental agreement and all. There are other things also, but this is one of the reason why it is done for 11 months. Many of you would be knowing that we do it for 11 months, not for 12 months, because if it is more than 11 months, then the person at some stage can become a deemed donor. Okay, so this is the point. Okay, the whole thing we have covered there, that example. The property is not used for own business or profession. Okay, so if he uses for own business or profession, it will be outside the purview of house property. ठीक है, अगर वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो उसका जो भी टैक्स बनेगा वो पीजीबीपी में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। ये कुछ कोर्ट केसेस में इंसिडेंटल लेटिंग क्या क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए क्या माना गया है वो बताया। इफ लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज कर रहा है, यानी अपने बिजनेस इजीली चलना चाहिए करके लेट आउट कर रहा है ना, सो दैट विल बी इंसिडेंटल टू बिजनेस। इफ इज लेटिंग आउट टू गवर्नमेंट एजेंसीज, उसका एक बिजनेस था, उसने क्या किया, ये एक केस है जिसमें वो पोस्ट ऑफिस, बैंक, इनको सबको किराए से दे दिया अपने ही कॉम्प्लेक्स में, तो उससे उसका बिजनेस बहुत इजी हो गया। तो उनसे जो किराया है ना, इट वाज सेट टू बी इंसिडेंटल फ्रॉम लेटिंग। इन दिस केस व्हाट हैपेंड, letting out to government agencies, this is a case, actually case law, where he had let it out to bank and post office, and he got great advantage from that because his business was like that. So whatever rent he got from bank and post office, that was considered as incidental to business. Letting out to ancillary unit, ancillary means our supporting unit. Okay, so say for example, I buy raw material from someone, that shop is 10 kilometers away. I have some space, I have let it to him, and even if I pay a little less, I'll still let it out to him because I'll get continuous supply, right? So that letting will also be incidental to business. These are just some examples. ठीक है, समझ गए? हिंदी स्टूडेंट्स भी सिंपल ये है, इसमें एम्प्लॉय को देगा या कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसी को कर दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बैंक पोस्ट ऑफिस को दिया था एक ने अपने कॉम्प्लेक्स में, तो उसका बिजनेस इजी हो गया उससे। तो कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो किराया आ रहा है वो इंसिडेंटल टू बिजनेस। एंसिलरी यानी जैसे आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं या ऐसा कोई किसी को आपने दे दिया किराए में, तो इट विल बी इंसिडेंटल। ओके, नेक्स्ट जो है आपको ये चीज देखना है कि अगर आप किराया ले रहे हो, तो भले ही आप 50 लोगों को किराए में दे रहे हो, देयर आर सम पीपल, I am not sure whether you know that, but I have seen some such people. They have many houses, small houses. Okay, they have say 50-60 such houses, small houses. They let it out to various people, and then from 5th onwards they go on collection. So that is what they do for a living, basically. So there are such people. Okay, so even though he's using it as a business, right, but he's getting a rent for the house property, correct? The person is living in his house for a house property, and for that he's paying rent. So it will be treated as rental income only. So it's business of letting out the property, whether you let out 1 property or 20 property, that income will be income from house property. Okay, it will be income from business only in these cases when it is incidental to his business. ठीक है, ये समझ गए ये पॉइंट? अगर कोई कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि मैं आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, मैंने देखा भी है कि कुछ लोग होते हैं जिनके 50-60 घर होते हैं, छोटे छोटे, कुछ एक चाल टाइप होता है उनका, ठीक है? तो 5 तारीख से रेंट कलेक्शन चालू करते हो और पूरे महीने में, अच्छा इसने आज नहीं दिया, फिर 2 दिन के बाद वहां जाए, वही काम रहता है उनका, ठीक है? रेंट वसूलते हैं, बस वही इनकम में उनका चलता है। तो अब ऐसे लोगों को भी, क्योंकि वो किराया वसूल रहे हैं ना, तो आप एक घर का वसूल या 50 घर का, वो हाउस प्रॉपर्टी ही रहेगा, ठीक है? इंसिडेंटल टू बिजनेस कब कहलाएगा बिजनेस इनकम? ऐसे केसेस में सर,
ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। अब ये देखिए, ये जो केस है यहाँ पे फॉरेन प्रॉपर्टी अगर है, अगर आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स का टेबल ध्यान में होगा, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इफ यू रिमेंबर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टेबल, you will understand this very easily. If a house property is situated abroad, okay, annual value for OR will be always taxable. We know that OR is always taxable, correct? For NOR and NR, income must be received in India, only then it will be taxable. Okay, so these 2 points have a bearing on your incidence of tax table. And see how, so if property is situated in abroad in the foreign country, so when we compute, we'll use all Indian rules for computation. Okay, we won't use they will have some rules there, right? But when we compute in India, we will use our rules. That's all it is. Okay, so then disputed ownership. So like I had given you the example of 3-4 brothers, they have a property dispute. ठीक है, 3-4 भाई हैं उनके और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है अगर, तो जो प्रॉपर्टी में रह रहा है, जो एंजॉय कर रहा है, या अगर वो किराए पे दिया हुआ है, तो जिसके हाथ में किराया आ रहा है उसी को टैक्स करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड ओनरशिप में तो जो घर वो देखेंगे कि पोजेशन किसके हाथ में है और रिसीट किसके हाथ में, क्योंकि ओनरशिप तो होगा नहीं ना, तो डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, right? So for disputed ownership, you see either who is receiving income or who has possession of the property, because the legal title is under dispute, right? So you won't have a legal title. So then next is composite rent. Okay, so this is a good point. So composite rent is something, as the name suggests, composite. Okay, rent of building plus for other services or rent of other assets. So here you are giving him the building also, and you are providing some other services also, like a paying guest service, or you are providing him food, okay, or some other external services you are providing, okay, or you are providing some other assets also along with it, okay, with the building, right? So this case becomes composite rent. So these are what are assets. Example is furniture. So many times we provide furnished apartments, correct? So if unfurnished we provide, say we take rent of 15,000, and if you furnish it, you'll say the person will get TV, cot, everything, and you say, if I furnish it, then I'll take 25,000, right? So that kind of examples these are. So for composite rent means rent of building, only building as it is, and because of services, what is extra you are charging. Okay, so rent of building plus rent of assets or services. So now how is it treated? Tax treatment. Okay, now these are example of services. Services, what all can be? You can be giving garden facility, food, lighting. Okay, lighting is not the normal electricity, there's some special lighting if you are giving. Okay, or other assets are like machinery, plant, furniture. Okay, so this is how you can give it. So let's see the tax statement now. Very simple, just follow it logic wise. So I've made this table specifically so that it gets very simple for you. Okay, so I'll be reducing that table, last table which we talked about in residential status. So I'll be reducing it so that we can understand it better. So this table is, if you see this, two things. Okay, one is if segregation possible, if you can segregate it, like that rent without assets is 15,000, with assets is 25,000. So you are able to segregate it. Okay.
On this case, segregation not possible. Like if I'm giving a factory, okay, so I'll give him the whole rent only, right? I will not tell you for machinery you pay me 50,000, for the factory you pay me 40,000, 90,000. I won't say like that, right? I'll say the total only, because I cannot give the machinery without letting out the building, correct? And I cannot let out that building without that machinery, correct? That is case of segregation not possible. तो यहाँ पे हमने अभी ये देखा है, जैसे कंपोजिट रेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें रेंट ऑफ बिल्डिंग और रेंट ऑफ या दूसरे एसेट्स रहते हैं, जैसे हम फर्निश करके देते हैं या फिर कुछ सर्विसेज देते हैं एक्स्ट्रा हमको। तो ऐसे में इसको टैक्सेशन कैसे करेंगे ये हम देख रहे हैं। अगर आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि जैसे ये घर का रेंट है और ये सर्विस का या ये एसेट का रेंट है, वो पॉसिबल है तो ये पहला टेबल है, नहीं पॉसिबल है तो ये दूसरा टेबल, ठीक है? कि जैसे इसमें मैंने बोला कि फैक्ट्री है तो आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे, पूरा ही देना पड़ेगा आपको, है ना? सो हियर इफ सेग्रीगेशन इज पॉसिबल, sum received for use of building will be house property, and HP is house property, just put in short, okay, right? This is very clear. And for other things it will be either PGBP or IUS. So if it is not a regular business activity for him, normally it will go into IUS. But if it is a business, just giving of amenities is a business for him, then it will be PGBP. So normally in house property cases it mostly goes to IUS, okay, not conclusively, normally. So this is first thing. Where you are not able to segregate, then house property you won't consider house property, it will be PGBP or IUS, that's all. Okay, this has been presented as simply as possible. You can see your study material also has been given a little complex way. Okay, so and one more thing is rent from paying guest. Okay, this is always IUS, remember. Why is paying guest facility itself is that you will stay here and they will give you food also. The contract is like that, right? It's not separable. So which is why it's not separable means what you will do, you will go to this point, correct? So that's why it is IUS. Why PGB paying guest is IUS? Who gives paying guest? People, family people and all, they have some space, so they give for paying guest. It's normally not an organized business for them. Okay. Now this is one thing, and another thing is like I had told you, give a factory example, right? If it is letting with inseparable assets, that you cannot separate it. Okay. In that, so it's not possible to separate, but not acceptable to the other party. People will not take it. If you give it without furnished, people will not take. So you have to give it furnished only, either that way, or it is not possible for you to change it. Now you already put all furnished other things. Now if you sell those furniture and all, you will not get good price. So you are basically giving it as furnished. Okay, any of these cases, it becomes inseparable. Yeah. Okay, then rent from properties, okay, is business income, and so rent, sorry, 1 minute, no. So such rent will be business income or income from other sources. So it's the same as above. Okay, this one. Okay, just another para added basically. The examples you can see hotel rooms. So in hotel rooms, this is a good example. So you have got those amenities and all. So if there hotel rooms are designed in a specific way, right? If you do not have that amenities, will you go to the hotel? No. So it is very, very important. Both are very important. Okay. So things like these. Okay. So this is, so just remember for this, ये पार्ट जो है मैंने जो बताया, ये सब पूरा सिंपल, आपको बस ये टेबल याद रखना है। देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सेग्रीगेशन हो पाएगा क्या, ये देखना है। होता है तो हाउस प्रॉपर्टी को अलग हाउस प्रॉपर्टी में डाल देना है, और दूसरे पार्ट को आप पीजीबीपी आईयूएस में डाल देना है, बस कुछ नहीं करना है। और नहीं हो रहा है तो पूरा पीजीबीपी आईयूएस में डाल देना है, खत्म। ओके, बस इतना ही है कंपोजिट रेंट का। सर अगर नहीं हो पा रहा है तो किस केस में पीजीबीपी में डालेंगे? हाँ,
अगर सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है तो किस केस में पीजीबीपी में कंसीडर करेंगे? अगर देखिए सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है तो ये देखा केस टू केस बेसिस में देखा जाएगा। तो अगर आपका जो सपोज आप जो एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो वन ऑफ है, यानी आपका काम नहीं, आप कोई 10-15 लोगों को एम्यूनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ उस घर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं एम्यूनिटीज, ठीक है, ऐसा है तो अदर सोर्सेज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका आप ऐसे एम्यूनिटीज बहुत लोगों को प्रोवाइड करें, आपका वो एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ही है, तब वो बिजनेस इनकम में है। ओके, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यही है, आपका क्या बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं ना, ये जो पेइंग गेस्ट, सॉरी, ठीक है, पेइंग गेस्ट जो है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पेइंग गेस्ट क्यों आईओएस में जाता है। ये अगर देखेंगे आप, पीजीबी पे नहीं जाता, नॉर्मली एक फैमिली होती है, ठीक है, पीजी कौन देता है, फैमिली रहती है, कुछ एक्स्ट्रा उनका खोली रहता है तो दे देते हैं वो, है ना। तो ये उनका इनकम नहीं है कि जो पीजी को, जैसे उन लोग 15-20 स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह पीजी दे रहे हैं, उससे कमा रहे हैं, वैसा नहीं रहता उनका, इसीलिए सीधा आईओएस जा रहा है। अगर वो पीजी में भी अगर वो ऑर्गेनाइज्ड ऐसा कर दे हो कि उनको 15-20 दिन को दे रहे हैं अलग अलग जगह, तो देन पीजीबीपी में चले जाएगा। ठीक है, तो हम पीजीबीपी के चैप्टर में एक्चुअली डिटेल में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज बिजनेस में जाता है, क्या नहीं जाता है, वो जो डिटेल्ड कंसिडरेशन जो है वहां करेंगे हम। ओके, यहाँ बस अब हम एक राउंड अबाउट वे में हम देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे को ओनरशिप की। को ओनरशिप मतलब दो से ज्यादा लोग एक ही प्रॉपर्टी के अगर मालिक हैं, ठीक है, नॉर्मली कई जगह देखा जाता है, ठीक है, कई लोग को ओनर्स है, मैं खुद को ओनर हूँ मेरे हाउस प्रॉपर्टी का। तो जो को ओनरशिप जो है इज वाइडली प्रिवेलेंट। तो इसमें जो है ना, दो से ज्यादा लोग ज्वाइंटली ओन करते हैं। तो इसमें बस ये देखना है कि जो इंडिविजुअल शेयर जो है ना, सबका डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, तब शेयर ऑफ ईच पर्सन जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो ये रहता है नॉर्मली जो है, क्योंकि जब आप ओनरशिप जो आप जब को ओनर बनते हो तो आपका शेयर भी डिफाइंड रहता है। तो अब कुछ भी नहीं रहता है तो उसको 50% माना जाता है, यानी आधा आधा माना जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर डिफाइंड रहता है अगर कुछ रेशियो रहा तो नॉर्मली जो को ओनरशिप में इट इज डिफाइंड एंड एसर्टेनेबल। अगर नहीं है, सपोज नहीं नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो लोग, किसका क्या शेयर है वो, ठीक है, तो वो को ओनरशिप में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो को ओनरशिप में आपको टैक्स करने के लिए डेफिनेट रहना चाहिए सबका शेयर, जो नॉर्मली रहता है, ठीक है। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप करते हैं, और ईच ऑफ देम कैन गेट बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये क्या है हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हम दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2 घर तक आप रख सकते हैं। तीसरा घर आपका डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता है और उसका किराया कैलकुलेट होता है, तो हम देखेंगे आगे कंप्यूटेशन में। और ओके, सो हियर इन co-ownership is like 2 or more people owning one house. Their share should be definite and ascertainable. Normally it is, okay, because the share is like, if nothing is given, it's 50-50 for 2 people, and otherwise some ratio is always defined when it is registered. Okay, so but you have to see in the problem, it is definite and ascertainable, then share of each person will be income from house property. Okay, so then each of them can claim benefit of self-occupied house property. This part we'll see later. As I said, 2 properties are exempt for you. Third property is deemed to be let out. So we'll see that later. And there is an interest on loan deduction is there. So each one of them will get it separately. So don't worry about these figures now. We'll all see this later on. Okay, when we go to the problems, we'll see all of it. Okay. And this is a mandatory provision. It has to be followed. It's not optional that one person will say, okay, I will not, I'll just do it in my name and give it. No, it is a mandatory provision. Okay, then next point is partner's property used by the firm. If partner's property is used by the firm, it is considered that he is using
his own house on rent. That's how it is considered. So it is not taxable as house property but as PGBP. ठीक है, पार्टनर का प्रॉपर्टी अगर फर्म यूज कर रहा है तो उसको ये माना जाता है कि वो अपनी ही प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहा है, ऐसा ऐसा देखते हैं उसको। तो इसीलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं रहेगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जब स्टॉक इन ट्रेड वाला पॉइंट थोड़ा अलग पॉइंट है, इसलिए मैं अगले बार में कवर करूंगा आपका। ओके, तो ये भी कम टाइम में नहीं होगा। तो अब हम टैक्स को संडे को कंटिन्यू करेंगे। 2 to 4 आपका एग्जाम रहेगा, 4 PM। तो सबसे पहले 2 PM का हम लोग ज्वाइन करेंगे। मैं आप लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस है तो वो ले लूंगा। ओके, उसके बाद हम टेस्ट चालू कर देंगे। राइट, सो प्लीज ज्वाइन टेस्ट, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द टेस्ट। ओके, आई ऑल्सो नो वेयर यू स्टैंड, सो आई कैन ऑल्सो एडजस्ट बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, so thank you very much, we'll meet tomorrow. Sir. Hello.